स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? हाँ सर, यस Yes, sir. Yes, sir. स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पैनक्रियाज। First point, pancreas is a heterocrine gland. Or mixed gland. Pancreas has two parts. Exocrine part, which is almost, you can say, 98 to 99%. Called as acidic and secrete pancreatic juice with pancreatic enzyme. Endocrine part, which contains almost, we can say, 1 to 2% only. It is called as sublangerhans. And islets of Langerhans present in the endocrine part of pancreas, that is with 5 different type of cell: alpha cell, beta cell, then delta cell, then gamma cell, and then PP or F cell. Alpha cell secrete glucagon, beta cell insulin, delta cell somatostatin, gamma cell is the precursor of alpha and beta cell. PP cell or F cell secrete pancreatic polypeptide. Comes to the functional part. The glucagon is actually concerned with the increased quantity of blood glucose, so it is hyperglycemic hormone. And insulin reduce करता है blood glucose को, so it is hypoglycemic hormone. Somatostatin that actually inhibit growth hormone, insulin, and glucagon. So primarily, somatostatin is a growth inhibiting hormone. Plus, they also inhibit the insulin and glucagon. Pancreatic polypeptide digestion chapter में पढ़े थे हम लोग. It inhibit pancreatic juice. It inhibits the secretion of pancreatic juice. So we need to discuss here the function of glucagon and insulin. So we are starting the glucagon. Glucagon का target क्या है? Now it actually act on hepatocyte cells of liver. It acts on hepatocyte cells of liver. Main function क्या है glucagon का? ना glycogenolysis. That is the conversion of
breakdown of glycogen into glucose. So mainly it is associated with the increasing blood glucose. ये blood glucose को increase करते हैं. Second point is what? Now glucagon also stimulate gluconeogenesis. Gluconeogenesis मैंने आपको बताया था. Non-carbohydrate into carbohydrate. Non-carbohydrate यहाँ पे क्या है? Amino acid, carbohydrate means they will increase the blood glucose. So it reduce. इसको ग्लूकोज इंक्रीज करना है. अगर इसको ग्लूकोज इंक्रीज करना है ब्लड में, तो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को क्या करना है? रिड्यूस करना है. So that is why this is a very important sentence. It reduce the cellular uptake of. It reduce the cellular uptake of glucose. तो सेल का जो यूटिलाइजेशन है, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, उसको ये रिड्यूस करता है. सो देयरबाय दे आर इंक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज. समझे या नहीं समझे? यस सर. सो इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज. तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ना हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन. एंड जो ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करेगा इसको आप क्या बोलेंगे? डायबिटीजेनिक हार्मोन. इसीलिए डायबिटीजेनिक हार्मोन प्लस हाइपरग्लाइसेमिक भी है. समझ में आ गया? यस सर. याद रखना है कि ग्लूकागॉन का टारगेट क्या है. जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ग्लूकागॉन का टारगेट यहाँ पे कौन है? हेपेटोसाइट सेल्स ऑफ लिवर. वैसे ही स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट इंसुलिन. As it is already mentioned, it is secreted by the beta cells of the islets of Langerhans. इसका टारगेट कौन है? It is act on 3 different cells. Need to remember, very very important. Myocyte of muscles. Muscle cells is called as myocyte. Hepatocyte of liver and adipocyte of adipose tissue or lipid, that is adipose. तो याद रखिएगा टारगेट क्या है इसका? मसल्स, लिवर एंड adipose. This is the 3 target of insulin. फंक्शन देखते हैं. ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस मींस क्या है ना? फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन और सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन. सेकंड, प्रोटीन सिंथेसिस फ्रॉम amino acid. Lipogenesis, the formation of lipid. Lipogenesis or lipid synthesis from fatty acid. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, कि इंसुलिन ग्लूकोज रिड्यूस करता है ब्लड में, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, लिपिड फॉर्मेशन करता है. तो अगर इंसुलिन डिक्रीज कर जाएगा तो इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज, प्रोटीन ब्रेकडाउन स्टार्ट्स,
लिपिड ब्रेकडाउन स्टार्ट्स। इसलिए डायबिटिक पेशेंट के केसेस में क्या होता है ना, प्रोटीन डेफिशिएंसी रहता है, मतलब प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाता है ज्यादा, लिपिड ज्यादा ब्रेकडाउन हो जाता है, ब्लड ग्लूकोज इंक्रीज करता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट क्या होता है, थोड़ा सा दुबले पतले होते हैं, क्योंकि प्रोटीन ब्रेकडाउन हो जाता है, लिपिड ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, सो दे इंक्रीज, इनको ग्लूकोज रिड्यूस करना है, तो यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज शुड बी इंक्रीज्ड, जस्ट अपोजिट ऑफ ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या किया था ना, ये रिड्यूस किया था सेलुलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज को, लेकिन ये इंसुलिन क्या करेगा ना, इंक्रीज करेगा सेलुलर अपटेक। जितना ज्यादा सेल ग्लूकोज का यूज करेगा, ब्लड में ग्लूकोज उतना रिड्यूस करेगा। समझ में आया कि नहीं इंसुलिन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So insulin is actually increase the cellular uptake of glucose and amino acid, क्योंकि इनको अमाइनो एसिड सेल के अंदर जाएगा तभी प्रोटीन सिंथेसिस होगा, क्योंकि जब तक अमीनो एसिड सेल के अंदर नहीं जाएगा तो प्रोटीन कैसे सिंथेसिस होगा, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन होता है, वो भी सेल के साइटोप्लाज्म में। सो अमीनो एसिड शुड बी इंक्रीज सेलुलर अपटेक along with the glucose। तो ये ग्लूकोजेनेसिस करता है, ग्लाइकोजेनेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो अल्टीमेटली दैट decrease the blood glucose, so called as hypoglycemic hormone, and that results into what? The anti-diabetogenic hormone. Anti-diabetogenic मतलब ये क्या हो जाएगा? Antagonistic to what? So insulin is antagonistic to, याद करिए कौन सा हार्मोन मैंने लिखा है ना जो ऑपोजिट होता है इंसुलिन का? GH, थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन और एड्रेनालिन एंड ग्लूकागॉन। याद रहेगा ये पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. So insulin Yes, is sir. not only antagonistic to glucagon. Insulin is antagonistic to all such hormones which which increase the blood glucose. तो blood glucose increase करने में पांचों का रोल मैंने बताया था previously. GH, thyroxine, cortisol, adrenaline or adrenaline, and glucagon. Clear है? Yes, sir. चले हम लोग नेक्स्ट पेज में। Yes, sir. Yes, sir. We are coming to diabetes. Mellitus. Diabetes mellitus is actually due to deficiency of insulin. It is due to deficiency of insulin. Symptom क्या है? Number 1, hyperglycemia. Hyperglycemia means high blood glucose. Second is glycosuria, means presence of glucose in urine. Number 3, diuresis, excess urine or more urine. Number 4,
कीटोनुरिया एंड कीटोनामिया. कीटोनामिया पहले लिखिए एंड कीटोनुरिया. कीटोनामिया means ketone bodies in blood and ketonuria means ketone bodies in urine. मैंने आपको बताया था ketone bodies कब होता है? The ketone present in the urine or blood, that is with respect to the breakdown of lipid. कीटोन तभी होता है जब लिपिड ब्रेकडाउन होता है. एंड हम लोग अभी पढ़े थे कि इंसुलिन डेफिशिएंसी होगा तो लिपोलाइसिस होगा, because the function of the insulin is to lipogenesis. तो लिपिड ब्रेकडाउन होने से कीटोन बॉडीज प्रेजेंट रहेगा. नंबर 5, that is polyphagia, means increased hunger. क्योंकि रिजर्व फूड मटेरियल बिल्कुल नहीं होगा बॉडी में. इंसुलिन रिजर्व फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन कर देता है, प्रोटियोलाइसिस. इंसुलिन डेफिशिएंसी से क्या होगा ना, प्रोटियोलाइसिस होगा. इंसुलिन डेफिशिएंसी से लिपोलाइसिस होगा. तो जो डायबिटिक पेशेंट है उनके केसेस में रिजर्व फूड मटेरियल ऑलमोस्ट कम रहेगा, तो उनको बार बार भूख लगेगा, बहुत ज्यादा भूख लगेगा. एंड नंबर 6, पॉलीडिप्सिया. पॉलीडिप्सिया मीन्स increased thirst. प्यास भी बहुत लगेगा बिकॉज यूरिन ज्यादा फॉर्मेशन होता है. नंबर 7, यूरिन becomes, sorry, blood becomes acidic, acidosis. Instead of 7.4 pH यहाँ पे pH हो जाएगा 6.8, तो acidic pH हो जाएगा. नंबर 8, नंबर 8, Sir, number 7 is Blood. acidosis. acidosis. तो ब्लड विजन मतलब ठीक से दिखाई नहीं देगा. नंबर 9, नंबर 9 है डिलेड हीलिंग. अगर किसी जगह पे इंजरी हो जाता है तो हीलिंग बहुत ही लेट होगा, डिलेड हीलिंग होता है. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आया कि नहीं? So these are the symptoms with related to diabetes mellitus. अभी हम लोग डायबिटीज मेलिटस का 2 टाइप में आते हैं. डायबिटीज मेलिटस का 2 टाइप है. एक है टाइप 1 IDDM, second is type 2 NIDDM. टाइप 1 एंड टाइप 2 का डिफरेंस कर देते हैं. फुल फॉर्म है इंसुलिन डिपेंडेंट diabetes mellitus. Second is non-insulin dependent diabetes mellitus. मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट में इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब इंसुलिन की जरूरी पड़ता है, नीड इट. लेकिन टाइप 2 में क्या है, इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगा, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस. इट इज कॉल्ड जुवेनाइल onset diabetes mellitus. Why it is called as juvenile onset? Juvenile onset इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये
यंग एज में होता है, ओल्ड एज में नहीं होता है, यंग एज में होता है। Almost we can say the age group of 20 years, younger than 20, less than 20 years of age में ये डिजीज ज्यादा होता है, इसीलिए उसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलिटस बोलते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। Autoimmune disease means when the antibody will target own cell, own body organs. So autoimmune disease in which antibody attack beta cells here. तो बीटा सेल को टारगेट करता है, सो लेस इंसुलिन सिंथेसिस होगा कि नॉर्मल इंसुलिन सिंथेसिस होगा? लेस इंसुलिन सिंथेसिस होगा। क्योंकि लेस इंसुलिन सिंथेसिस होता है, इसीलिए डायबिटीज मेलिटस इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। समझे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And it need insulin for treatment. It need insulin for the treatment. Next पे आते हैं टाइप 2, उसको बोलते हैं मैच्योरिटी अनसेट डायबिटीज मेलिटस। मैच्योरिटी अनसेट डायबिटीज मेलिटस मैच्योरिटी अनसेट डायबिटीज मेलिटस ये ओल्ड एज डिजीज है और एल्डर एज डिजीज है। यहाँ पे इंसुलिन जो है बिकम्स लेस और नॉन सेंसिटिव हो जाता है टू टारगेट्स। ठीक है, तो इंसुलिन बिकम लेस सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव टू द टारगेट सेल, क्योंकि एवरी हार्मोन बीइंग रिसीव्ड बाय ए टारगेट इन द टारगेट ऑर्गन, तो रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रोटीन चाहिए, एंड टारगेट वही होता है जहां पे रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि मैंने इंसुलिन का टारगेट आपको बताया था, लिवर सेल, मसल सेल्स एंड एडिपोसाइट सेल्स। तो ये तीनों पे इंसुलिन को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर होता है। अगर ये रिसेप्टर सेंसिटिव नहीं हुआ, अगर ये रिसेप्टर रिसीव नहीं किया, तो इंसुलिन आपके बॉडी में होने के बाद भी इंसुलिन फंक्शन नहीं करेगा, क्योंकि रिसीव नहीं हो रहा है, रिसेप्टर इज एब्सेंट और रिसेप्टर इज ऑलमोस्ट नील और कम है। इसीलिए यहाँ पे इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से ये डायबिटीज नहीं है। The normal concentration of insulin is present in your body, so but still the function of the insulin is not occurring. That is why it cannot be treated by the insulin. No need of insulin for treatment. इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस। क्लियर है डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 टाइप 2? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So coming to the pineal gland, तो क्या लिखना कंप्लीट हो गया? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट आते हैं पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड का लोकेशन हम लोग पढ़े हैं, इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन ब्रेन, नियर थैलमस, secrete
मेलाटोनिन हार्मोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइट reduces the melatonin synthesis. Light reduces the melatonin secretion. And हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में कि MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन लाइट इंड्यूस करता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। MSH को स्टिमुलेट करता है लाइट, लेकिन मेलाटोनिन को लाइट रिड्यूस करता है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं मेलाटोनिन एंड MSH आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर। समझे कि नहीं? क्लियर है? Yes, sir. Sir. Its secretion increases in night और इवनिंग। इवनिंग होने से मेलाटोनिन का सिक्रेशन क्या होगा ना, इंक्रीज करेगा, क्योंकि लाइट कम हुआ, डार्कनेस ज्यादा हुआ, तो मेलाटोनिन का सिक्रेशन इंक्रीज करेगा। सो इट्स सिक्रेशन इंक्रीजेस इन इवनिंग एंड थ्रू आउट नाइट। थ्रू आउट नाइट ये इंक्रीज करेगा। एंड इसके बाद डे टाइम में क्या होगा ना, सबसे हाईएस्ट हो जाएगा एट मिडनाइट। नाइट में इंक्रीज करेगा एंड हाईएस्ट एट मिडनाइट। ठीक है? एंड देन डिक्रीजेस ड्यूरिंग डे टाइम। सो इसीलिए लीस्ट कब होगा ना, एट नून। मिडनाइट मतलब 12 AM। सो 12 AM में सबसे हाईएस्ट होगा एंड 12 नून में 12 PM में सबसे कम होगा। क्लियर है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. And melatonin is actually, it is associated with sleep. मेलाटोनिन ज्यादा सीक्रेट होने से स्लीपिंग एक्टिवेटेड होता है, इंड्यूस होता है। सो इट कंट्रोल स्लीप वेक साइकिल और 24 आवर सर्काडियन रिदम। ये स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। रात को 12 बजे के बाद हम लोग को बहुत जोर का नींद आता है। रात को 12 बजे डीप स्लीप होता है एंड दिन को 12 बजे, दिन में हम लोग को नींद नहीं आता है, कम आता है। रात को ज्यादा आता है क्योंकि मेलाटोनिन कंट्रोल करता है स्लीप को। तो स्लीप वेक साइकिल इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेलाटोनिन हार्मोन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द पिनियन ग्लैंड। क्योंकि ये स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है, तो ये 24 आवर में आपका जो स्लीप वेक का जो रिदम है उसको कंट्रोल करेगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द 24 आवर सर्काडियन रिदम एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी और ब्रेन, जो भी बोलिए। तो बायोलॉजिकल क्लॉक ऑफ बॉडी और ब्रेन। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं। कंप्लीट। Yes, sir. Yes, sir. It also control
to also control metabolism, skin pigmentation, then defense, and menstrual cycle in female. तो ये मेटाबॉलिज्म, स्किन पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेबिलिटी, ये सब कंट्रोल करता है। बॉडी टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेलाटोनिन oppose the action of FSH and LH, क्योंकि FSH एक्चुअल को अपोज करता है, अपोजिट करता है, इनहिबिट करता है, इसीलिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के केसेस में वो अफेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, द पर्सन ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, अगर किसी पर्सन का बाय बर्थ ब्लाइंडनेस है तो उसके केसेस में मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होगा। बिकॉज बाय बर्थ है, अगर एक्सीडेंट की वजह से ब्लाइंडनेस हुआ है तो अलग बात है, लेकिन अगर बाय बर्थ है तो उसका जो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट एंड डार्क वो एब्सेंट है। तो लाइट सेंसिटिविटी एंड डार्क सेंसिटिविटी ऑलमोस्ट नील, तो इसीलिए उसका मेलाटोनिन सिक्रेशन कम होगा। अगर कम मेलाटोनिन सिक्रेशन होता है तो ये जो अपोजिट फंक्शन टुवर्ड्स एफएसएच एंड एलएच है वो नहीं रहेगा या तो कम होगा। तो एफएसएच एंड एलएच का जो फंक्शन है ब्लाइंड पर्सन के केसेस में ज्यादा होता है फंक्शन, तो दैट इज व्हाई एफएसएच एंड एलएच मोर फंक्शनली एक्टिव इन द ब्लाइंड पीपल्स, एंड इसीलिए उनके केसेस में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं प्यूबर्टी, वो बहुत अर्ली आ जाएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा इन कंपैरिजन टू द अदर पर्संस। सो sexually mature or puberty becomes earlier। समझे कि नहीं समझे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Yes, sir. Yes, sir. तो हम लोग नेक्स्ट में आते हैं थाइमस। थाइमस एक्चुअली एंडोडर्मल ओरिजिन है, एंडोडर्मल ओरिजिन, एंड लोकेशन अगर देखा जाए, ये लोकेशन ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्रेजेंट नियर हार्ट, वेंट्राइल टू आउटर, आउटर के वेंट्रल साइड में है, नियर द हार्ट। एंडोडर्मल ओरिजिन, इसका भी दो पार्ट है, दैट इज thymic cortex and thymic medulla।
Just like adrenal gland, adrenal cortex and adrenal medulla are, the second gland, which is thymus, also have cortex and medulla. और किसी में cortex medulla नहीं है, सिर्फ adrenal and thymus. And cortex that secrete that with thymocyte cells, and thymocyte cells secrete thymosin hormone. Whereas the medulla contains muscle corpuscles, and that muscle corpuscles phagocytic in nature. तो इसीलिए थाइमस ग्लैंड का दो रोल है. थाइमोसिन हार्मोन भी सीक्रेट करता है फ्रॉम द एड्रेनल, सॉरी फ्रॉम द कॉर्टेक्स पार्ट ऑफ द थाइमस, एंड दैट आल्सो सीक्रेट द that also contains the muscle corpuscles present in the medullary part of thymus that helps in the phagocytosis of the unwanted particles present in the body. तो इसीलिए thymus completely associated है with the immune system of your body. तो पहले thymosin हार्मोन का फंक्शन देखते थे. Thymosin actually that maturation of T cell or T lymphocyte. The T cell or T lymphocyte को mature करता है. That is why it is the thymus is called the training school of T lymphocyte. Training school of T lymphocyte. क्योंकि यहाँ पे T cells मैच्योर होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी lymphocyte. सेकेंड क्या है? नाइट फॉर्म्स both humoral mediated immunity जिसको हम लोग बोलते हैं HMI and cell mediated immunity. और CMI. तो ये जो ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी उसको हम लोग एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं. Humoral or antibody mediated immunity that is formed of what? That is formed of B cells, and cell mediated immunity that is formed of T cells. बस कल मैं इतना बता देता हूं कि T सेल का चार अलग अलग टाइप्स हैं. साइटोटॉक्सिक टी सेल और किलर टी सेल. अभी कुछ लिखना मत क्योंकि ये 12th का टॉपिक है. Second is helper T cell. Third is suppressor T cell. And fourth is memory T cell. ये जो helper T cell है, this helper T cell help produce antibody. So T helper cell is responsible for the production of antibody. हेल्प करता है ये. तो टी हेल्पर सेल अगर नहीं होगा तो एंटीबॉडी फॉर्मेशन भी नहीं होगा, एंड एंटीबॉडी फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो ह्यूमरल और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी भी फॉर्म नहीं होगा बॉडी में. एंड आपके बॉडी में जो इम्यूनिटी है ये बी सेल एंड टी सेल के वजह से ही इम्यूनिटी फॉर्म होता है बॉडी में. द टोटल इम्यूनिटी इज बीइंग फॉर्म्ड बाय बी सेल एंड टी सेल बोथ. So in that case we can say if the thymosin hormone will be absent or deficient, then both HMI and CMI will be deficient in the body, and उसके वजह से आपका टोटल जो इम्यूनिटी है वो धीरे धीरे वीक होता जाएगा. And that is the reason why
thymus is called form of immunity. Form of immunity इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये टोटल रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बिल्डिंग ऑफ द इम्यूनिटी, तो इसीलिए उसको form of immunity बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आते हैं. The thymus is also responsible for it accelerate cell division. इस सेल डिवीजन को भी एक्सेलरेट करता है. You know, सेल डिवीजन अगर एक्सेलरेट करेगा तो अल्टीमेटली हम क्या बोल सकते हैं? अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका जो आपका इंजरी है उसको वो हील करने में भी हेल्प करता है. एंड आल्सो हेल्प्स इन द अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी. अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी, तो ये प्यूबर्टी को भी ये एक्सेलरेट करता है. अटेनमेंट ऑफ प्यूबर्टी और सेल we can say sexual maturity. एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विथ एडवांसिंग एज, the size of thymus decreases. So in old age, it is very small sized or reduced thymus. And इसीलिए weaker immune response. इसीलिए ओल्ड एज पीपल में इम्यूनिटी पावर बहुत कम होता है, वीक होता है. Because the size of the thymus become gradually deteriorate as the age increases. समझ में आया या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो आप लोग को थाइमस में कोई इशू नहीं है. फंक्शन ऑफ थाइमोसिन इंपॉर्टेंट है. White is called as screening squid, white is called as throne of immunity, CMI, HMI. थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, इजी है. तो T यहाँ पे जो दिया है ना, T सेल, T का फुल फॉर्म क्या है? T स्टैंड फॉर थाइमस, क्योंकि ये T सेल को मैच्योर करता है, इसलिए T का फुल फॉर्म क्या है ना, थाइमस. वैसे B का फुल फॉर्म है बोन मैरो. तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं. ये तो आप लोग का सिलेबस के हिसाब से कंप्लीट मैंने कर दिए. 10 मिनट है तो मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू कर देता हूँ. दैट इज टेस्टिस. टेस्टिस one pair, extra abdominal. It is present outside the abdomen in the male. So one pair extra abdominal, primary sex organ in male. Primary sex organ as it is concerned with the what ना, ये भी मिक्स ग्लैंड. तो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन क्या है? ना एक्सोक्राइन फंक्शन है गैमेटोजेनेसिस. इसका एंडोक्राइन नेचर क्या है? ना सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन. So we need to go for the endocrine nature here in this chapter. तो मैं आपको डायग्राम करके समझा देता हूँ.
This is the structure of the three different seminiferous tubule. So this is actually the transverse section of seminiferous tubule. And it shows that this is jaw muscle. These are the spawns or spermatozoa. This is the Sertoli cell or Norse cell. इसको अदरवाइज सस्टेंटेबुलर सेल भी बोलते हैं. And these are the cells which is present in between the seminiferous tubule. This is called as the Leydig cell or interstitial cell. याद है ना ये डायग्राम हम लोग किए थे. ये डायग्राम हम लोग किए थे कि नहीं? हाँ Yes, सर. sir. मैं दोबारा कर रहा हूँ. तो spermatozoa cell which is under the control of, it is controlled by FSH. Sertoli cell is also to be under the control of FSH, whereas Leydig cell or interstitial cell is to be under the control of LH. And LH को otherwise male के केस में क्या बोलते हैं ना, ICSH, that is interstitial cell को जो stimulate करेगा उसको क्या बोलेंगे, interstitial cell stimulating hormone ICSH. And function मैंने वहां पे बताया था कि हम लोग को बस एक ही फंक्शन देखना है यहाँ पे कि Leydig cell और interstitial cell under the influence of ICSH or LH that secrete the testosterone. The testosterone hormone is secreted from what? The interstitial cell or Leydig cells of testis, seminiferous tubules of testis. Clear है कि नहीं? सर सेटोली के बाद क्या लिखा हुआ है? North cell और sustentabular cell. तो आई होप आपको समझ में आ गया, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या स्टार्ट करेंगे? फंक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन. ठीक है? Okay, sir. ओके सर. किसी को कोई डाउट है तो बोलिए. सर टाइप 2 डायबिटिक्स मेलिटस को क्या हुआ? अरे क्या नॉन हुआ बोलो? इंसुलिन